Hello students, welcome back. In this series of Fundamental of Agronomy, we were covered the introduction part, then we have started the agroclimatology part. Okay, so initially we have covered what is atmosphere, what are the weather elements, then we have seen solar radiation, temperature. Okay, so in this particular lecture again we are going to cover some part of the weather and climatic weather elements. Let's discuss the atmospheric pressure. Okay, आज हम बात करेंगे atmospheric pressure के बारे में. So pressure होता क्या है, ये डेवलप कैसे होता है. जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर आपको पता है कि इट इज कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ एयर और gases. Okay, so these gases along with water vapor and the aerosols and gases along with the water vapor, so they actually put some pressure on the earth's surface. Okay, so this pressure is nothing but the force exerted by the gases that is present above this. Suppose at a point, above that point whatever gases are there, whatever pressure they are putting on, that is atmospheric pressure. What is the force they are putting on per unit area? So pressure is nothing but the force per unit area. So that force that is exerted by the vertical column of gases on a particular area or unit area, that is called pressure. Okay, so due to vertical air mass the pressure is exerted, that is force per unit area. So remember relationship which is being asked in competitive exam, that is temperature is pressure is inversely proportional to temperature. Suppose when temperature is higher, then the pressure at a particular area, that is less. Okay, when the temperature is higher the pressure is less, when the temperature is lower then the pressure is high. Why? बिकॉज अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है कोई भी एरिया में तो वो जो गैस है वो ऊपर चला जाएगा, तो वो लाइट हो जाएगा, देन प्रेशर एक्सर्टेड विल बी लेस. ओके, एंड और एक रिलेशनशिप है दैट इज अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्टीट्यूड. सपोज हम ऊपर चलते जाएंगे, सपोज अल्टीट्यूड, व्हाट इज अल्टीट्यूड, जो मीन सी लेवल से हम कितना ऊपर है, दैट इज अल्टीट्यूड. ओके, सॉरी. So when we go on higher and higher, above the ground, then pressure will be less because उसके ऊपर जो gases होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो pressure by those gases or gaseous column that will be less. Okay, now pressure, remember pressure it doesn't have any direct effect on crop growth. क्रॉप ग्रोथ के ऊपर प्रेशर का कोई डायरेक्टली, सपोज हमारे ऊपर प्रेशर का कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं रहेगा, लेकिन it is controlling different weather elements or weather happenings. Okay, like wind speed, wind कंट्रोल करता है प्रेशर, प्रेशर नहीं होने से, प्रेशर डिफरेंस नहीं होने से विंड ब्लो नहीं करेगा. ठीक है, विंड कहाँ से कहाँ तक ब्लो करता है, जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहता है टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया विंड ब्लो करता है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन सम अदर एट्रीब्यूट्स लाइक क्लाउड मूवमेंट इन द एटमॉस्फेयर, देन different weather elements are depends on weather activities that depends on pressure, atmospheric pressure, but it is not directly influencing the crop growth. So which instrument we are using to record the atmospheric pressure, that is called barograph. Okay, barograph or barometer that is being installed in agrometeorological observatory to record the atmospheric pressure. And barograph is a aneroid barometer for measuring atmospheric pressure. What is the unit of pressure? That is millibar. Okay, millibar, or you can say Pascal, that is also how pressure is measured. Then next coming to another weather element, that is wind. So wind is nothing but the horizontal movement of the air. So how wind blows? It blows due to pressure gradient. Okay, so pressure gradient मतलब pressure differentiate होता है. कैसे pressure differentiate होता है? So कहाँ पे टेम्परेचर अगर हाई रहता है वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है. टेम्परेचर कैसे फिर डिफर होता है? सोलर रेडिएशन इंसिडेंस, या फिर कोई जगह में मतलब पास में वाटर बॉडी है तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहेगा या फिर ऑप्टिमल रहेगा. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होता है जहाँ पे जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफर होता है, एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो इट वेरीज, एंड व्हेन प्रेशर वेरीज सो विंड इज ब्लो. ओके, प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा विंड उतना स्पीड में मूव करेगा. सपोज समवेयर प्रेशर ग्रेडियंट इज 5 मिलीबार. ओके, एंड समवेयर प्रेशर ग्रेडियंट इज 15 मिलीबार. सो जहाँ पे 15 मिलीबार होगा तो विंड स्पीड वहाँ पे ज़्यादा होगा. ठीक है, अच्छा.
सो विंड इज नथिंग बट द एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हम डिस्कस कर चुके हैं. देन प्रेशर वेरिएशन इज ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ आर सरफेस. सो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ आर सरफेस की वजह से प्रेशर वेरिएशन होता है. सो हाउ दिस डिफरेंशियल हीटिंग हैपेंस? देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स लाइक स्पेसिफिक हीट of different elements, then different solar radiation insolation. So two major reason is there for pressure variation or temperature variation. So temperature variation होता कैसे? So it depends on soil का condition कैसा है, then whatever elements of the earth is there at a particular location, so what is its heat trapping capacity? What is specific heat? Specific heat is the calorie of energy that is required or heat energy that is required to increase 1 gram substance 1 degree Celsius. 1 degree Celsius increase करने के लिए 1 gram substance में कितना calorie energy और heat चाहिए, that is called specific heat. And remember, specific heat of soil, whatever sandy soil, there the specific heat is 0.2. देन अगर ऑर्गेनिक मैटर हाई है सॉइल में, देन दैट इज 0.5, मतलब इतना कैलोरी चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए. देन वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 1. ओके, सो जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, जब जैसे कि कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस रीच करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस रीच करने के लिए, रादर दैन सॉइल. सो जहाँ पे ड्राई एरिया है, एंड जैसे मैं बात कर रहा था पहले, जहाँ पे ड्राई एरिया है, ड्राई सॉइल है, अनदर प्लेस इज वेट, देन जहाँ पे वेट है वहाँ पे स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, दैट मीन्स मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो जहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड वहाँ पे जो इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट विल बी स्लोअर, क्योंकि सिमिलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज इंसुलेटिंग, आई मीन स्ट्राइकिंग ऑन द अर्थ, ओके, इन अ पर्टिकुलर रीजन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबल स्केल. ओके, सो प्रेशर डिफरेंशिएट ऐसे होता है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट. अनदर रीजन इज इंसिडेंट एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन. सपोज कहीं पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन रीच कर रहा है, कहीं पे रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन मोर रीच कर रहा है. सपोज क्लाउडी वेदर है, वहाँ पे डिफ्यूज रेडिएशन ज़्यादा हिट करेगा. सपोज क्लियर वेदर है एंड इट इज इन ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन, सो मोस्टली डायरेक्ट सोलर रेडिएशन हिट करेगा. सपोज इट इज इन टेम्परेट रीजन, सो वहाँ पे स्लैंटिंग पोजीशन में सोलर रेडिएशन हिट करेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पे इसीलिए कूल रहता है. समझ में आया? तो इससे टेम्परेचर डिफरेंशिएट होता है, एंड टेम्परेचर डिफरेंशिएट के बदले से मतलब वजह से हमारा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है एंड वहाँ पे विंड फ्लो होता है. नाउ विंड डायरेक्शन, अनदर पैरामीटर ऑफ विंड इज दैट इज विंड डायरेक्शन. विंड सपोज अच्छा, विंड डायरेक्शन मीन्स सपोज एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में विंड मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, तो बी पॉइंट को हम बोलेंगे लीववर्ड साइड एंड ए पॉइंट को बोलेंगे हम विंडवर्ड साइड. टुवर्ड्स ए दैट इज विंडवर्ड. सी विंड ब्लो कर रहा है ए टू बी, ओके, सो इस तरफ हम बोलेंगे लीववर्ड साइड जहां पे विंड ब्लो कर रहा है, एंड इस तरफ बोलेंगे जहां से विंड मूवमेंट कर रहा है वहां पे विंडवर्ड साइड बोलेंगे. सपोज नॉर्थ टू साउथ विंड ब्लो कर रहा है तो नॉर्थ इज विंडवर्ड साइड, साउथ इज लीववर्ड साइड. क्लियर? ओके, नाउ अच्छा, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग. सो नाउ yes, so name wind name according to from which side is blowing. So here this is wrong, so this should be like this. Okay, windward side from where wind is blowing and leeward side towards where wind is blowing. And wind is wind movement, that means कौन सी direction से move कर रहा है and कौन सी direction में जा रहा है, that is measured by wind vane. And wind speed is measured by anemometer. You must have seen, like wind vane is like arrow like structure, so it is moving. Then and anemometer is like we mostly use COP type anemometer. So COP type anemometer you must have seen in agrometeorological observatory. Wind speed is measured by anemometer. Next weather element, that is humidity. Humidity मतलब क्या होता है, कितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, दैट इज ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 different ways. Okay, so water vapor contained in the atmosphere, that is called humidity, and depends on wind and temperature.
सो जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी मतलब जल्दी वहाँ पे लूज होगा, एंड जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहेगा थोड़ा सा. देन it is expressed, humidity, atmospheric humidity is expressed in 3 different way. One is absolute humidity, one is specific humidity, another one is relative humidity. Absolute humidity, specific humidity and relative humidity. What is absolute humidity? That is the gram of water vapor present in meter cube area of atmosphere or air. Okay, per meter cube volume of air, what is the gram of water vapor present? That is called absolute humidity. What is specific humidity? That is gram of water vapor present in kg of air, that is specific humidity. And relative humidity is the water vapor present in the atmosphere per the water vapor it can hold, the air can hold into 100. And this is the most relevant, that relative humidity is most relevant from crop production point of view. Okay. Now, both absolute and specific humidity changes with temperature and less significance on crop growth, right? जैसे absolute humidity हम क्या बात किए कि gram of water vapor present in meter cube of air, like volume, gram per volume, okay, weight by volume basis, absolute humidity. Specific humidity is weight by weight basis. Relative humidity is expressed in percentage. Relative humidity is required to find out the saturation capacity of a particular atmosphere or air at a particular temperature and pressure. Now, what is vapor pressure deficit? That is the saturation vapor pressure and minus actual vapor pressure. That means, what is the saturation point of atmosphere? What is the vapor pressure? Suppose pressure exerted when there is saturation in the atmosphere minus the pressure the current pressure that is exerted by the atmosphere. Okay, that is vapor pressure deficit. So, when vapor pressure deficit is higher, that means it is far away from the saturation point. So, then that is called arid or dry climate. Okay. So, when it is vapor pressure deficit, remember when this is also coming in different competitive exam, like vapor pressure deficit when it is more than 2.5 kilopascal, then that is called dry air. Remember, more than 2.5 kilopascal vapor pressure deficit, then that is called dry air, and less than or equal to 1.5 kilopascal, then that is called humid air. The air is called humid air. And relative humidity is measured by psychrometer or hygrometer that consists of dry and wet bulb thermometer. So, जब हम बात किए थे your weather एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे एक होता है स्टीवेंसन स्क्रीन. स्टीवेंसन स्क्रीन में 4 टाइप का थर्मोमीटर होता है. हम बात किए थे ना थर्मोमीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. सो एक होता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, एक होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर, एक होता है मिनिमम थर्मोमीटर, अनदर वन इज मैक्सिमम थर्मोमीटर. Minimum and maximum thermometer are used for recording the minimum temperature and maximum temperature in a day. And minimum thermometer is one alcohol in glass type. Other type of thermometers, they are mercury in glass type. Okay, mostly thermometer contains mercury, but in minimum thermometer we use alcohol. Then the dry bulb and wet bulb thermometer, they are used for measuring the relative humidity. Remember? Okay. Now, some other important points from relative humidity. Relative humidity in crop canopy, that is measured by Assmann psychrometer. Okay. Relative humidity inside room, it is measured by hair hygrometer. Relative humidity for measuring continuous relative humidity, we use hygrograph. Okay, hygrograph or barograph, that is being installed in mostly the double Stevenson screen. Okay. Now, next parameter is evaporation. What is evaporation? Evaporation is the loss of water from the water bodies or the soil layer. Okay, any surface water loss, that is called evaporation loss. Surface water loss. Suppose यहाँ पे मेरा हाथ moist होगा and वो dry हो जाएगा कुछ time बाद. So that is called evaporation. That is the process of loss of water from any surface, that is called evaporation. But when the loss is through any physiological process from the plant canopy, then that is called transpiration. Now, evaporation is measured by different instruments are there which which are used for measuring evaporation rate. One is that is commonly used, that is USWB, open pan evaporimeter, United States Weather Bureau open pan evaporimeter. So यहाँ पे
generally the most of the agrometeorological observatory they use this for recording the like evaporation rate. यहाँ पे जो diameter है इस USWB ओपन पैन इवापोरेमीटर का जो डायमीटर है दैट इज 122 सेंटीमीटर एंड उसका हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर रहता है. ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग इवापोरेशन दैट इज सनकेन स्क्रीन इवापोरेमीटर. यहाँ पे डायमेंशन जो है 60 सेंटीमीटर डायमीटर, 45 सेंटीमीटर हाइट. अनदर मोस्टली यूज्ड इन फील्ड कंडीशन दैट इज कैन इवापोरेमीटर एंड इट इज मोस्ट सिंपल टाइप. That is a 1 liter iron can which is painted white. Okay, so these are the instrument we use mostly to measure the evaporation rate. The next weather element that is rainfall. Okay, next weather element that is rainfall we will discuss in next class. Okay, so अगर आपको कोई भी doubt है regarding this lecture, and you can have specific demand as well on which topic we should provide you some concepts or lectures, or any doubt you have, any numericals or any concept, then you can post in the comment section. So stay tuned, we will cover this series within like 1 month or 2, so that it will be easier for you to get into initial clarity. So क्यों ये सीरीज बना रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे पता नहीं चल रहा है, कहाँ से मतलब कैसे पढ़ाई करके कैसे कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पता नहीं चल रहा है. सो मैं सोचा कि मेरा जो नोट्स था उसको हम रिवाइज कर देंगे ताकि उसी के हिसाब से आप कुछ आपको आइडिया आ जाएगा तो पढ़ने में आसानी होगा. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स व्हाटएवर लेफ्ट. ओके, सी यू देयर. Till then, keep studying, keep signing.